हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस। सो बर्तमान पई आज आम डिस्कसन करवा तुम जो अपकमिंग LTR एग्जामिनेशन मेन रो जूलॉजी क्लास जो थे कि आम डिस्कसन करिया मोस्टली चैप्टर रहिबो हमर हार्मोन, ब्रेन, सेल एंड इवोल्यूशन। तो कहीं इतनी सारा टॉपिक को आम वन टाइम रे डिस्कसन करूचे कहीं ना हमर ऑफलाइन रे जो बेसिकली बैच मान चलची से बैच रे आमे इशू चैप्टर गुडा को सारुचे। सो निहात रूपे सो पिलांग पई हमर ऑफलाइन रो जो बैच मान रहिले बा ऑनलाइन रो जो स्टूडेंट्स मान रहिले सेमान पई हेल्पफुल हबो। ता सहित जो माने सब बेसिकली व्यूअर्स मान अछंती एबे लाइव रे देखुचंती एंड परवर्ती समय रिकॉर्डिंग हिसाब रे देखुचंती निहात रूपे आपन को फ्रूटफुल हबो। LTR लेवल रो क्वेश्चन अछि, आपनकर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अछि, जो टाइप रो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करछि सेही टाइप रो क्वेश्चन अछि। तेणु करी हमको ए क्वेश्चन निहात रूप रे हेल्पफुल हबो। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो और लेट्स स्टार्ट द MCQ सीरीज एंड कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप समस्त भल रथिबे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन हम पाकर अछि इवोल्यूशन रो क्वेश्चन अछि एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर। फर्स्ट क्वेश्चन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम फॉसिल बा फॉसिल रो हमकु जो एविडेंस मिलुची इवोल्यूशन हबार ताको हमें कोन कहउचे एई वेराइटी तो क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। कोन कहया? नमस्कार फाल्गुनी, ओम प्रकाश, यस राइट आंसर, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, क्लियर, परफेक्ट, ओके। देन जदि हमें कहबा स्टडी ऑफ अ फॉसिल इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ फॉसिल को कोन कहया? जल्दी जल्दी प्लीज सारिया ठीक 10टा बेलू को हम लाइव सेशन जेमती सरीथिबा दरकार ना, हम जेती क्वेश्चन आछि ता प्रैक्टिस करते दरकार। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज यस सरोजिनी पैलेंटोलॉजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। होमोलोगस ऑर्गन कहा को रिप्रेजेंट करूची? आज यू नो दैट होमोलोगस ऑर्गन मींस दैट इज द ऑर्गन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट से मानकर ऑर्गन रो स्ट्रक्चर जदी सिमिलर अछि होमोलोगस ऑर्गन कहया। एंड होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन? यस ओम, सरोजिनी, देवस्मिता, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन 100% ट्रू। होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ट्रिक मन रखिबो HDSC means homologous organ divergent evolution, analogous organ convergent evolution, clearly मन रखिबो। Then I am giving you example and you have to find out कि which type of evolution it will show and the example is sweet potato and potato। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ये को टाइप रो इवोल्यूशन आको हम कहि परिया? स्वीट पोटैटो पोटैटो भितर जो कंपैरिजन करिया जदी स्वीट पोटैटो इट इज द रूट मॉडिफिकेशन और वी कैन से दैट रूट इज मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज, एग्जांपल इज स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो होची कोन स्टेम मॉडिफिकेशन। तो स्टेम is modified for storage of food, example potato, root is modified for storage of food is called as sweet potato। so sweet potato and potato ये को टाइप रो इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यस राइट आंसर संदीप, परफेक्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन एंड इवोल्यूशन होची कोन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देन तुमको क्वेश्चन पचारबो थॉर्न्स ऑफ बागुनी बिला एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। थॉर्न्स ऑफ बागुनी बिला एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा को टाइप रो इवोल्यूशन? समस्त आंसर बढ़िया अछि। सरोजिनी, सुजाता, संदीप, ओम प्रकाश, देवीस्मिता। कौन पचले क्वेश्चन पचले हमर कोन ना थॉर्न्स ऑफ बागुन बिला और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा को टाइप रो इवोल्यूशन अछि एनसेट रे एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। होमोलोगस ऑर्गन एंड इवोल्यूशन होछि कोन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम कहि परिया, क्लियर, परफेक्ट आंसर। तापर मते को अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी अनुसार ह्यूज एक्सप्लोजन हवा फल रे को गैस रिलीज हेतला? What are the gas were released by the huge explosion according to Big Bang theory? Big Bang theory अनुसार को गैस रिलीज हेतला? ऑप्शन दोची हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड ना हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड ना हाइड्रोजन हीलियम। कोन हबो? हाइड्रोजन आउ हीलियम गैस, परफेक्ट, बढ़िया अछि। तापर चलो नेक्स्ट। डार्विन को फेमस सीप रो ना कोन थिला? आउ डार्विन को दीटा की कांसेप्ट कोन थिला? व्हाट आर द टू की कांसेप्ट्स ऑफ डार्विन एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीप व्हिच वाज जनरली यूज्ड बाय डार्विन? डार्विन को द्वारा यूज होतिबा सीप रो ना कोन एंड डार्विन को दीटा की कांसेप्ट कोन थिला? यस परफेक्ट अछि सरोजिनी,
संदीप राइट आंसर हाइड्रोजन हीलियम गैस वाज जनरली फॉर्म होइतला आफ्टर द एक्सप्लोजन बिग बैंग थ्योरी अनुसार एंड डार्विन को फेमस जहाज रो ना एचएमएस बीगल एंड यस डार्विन को दीटा की कांसेप्ट थिला ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन दीज आर द टू की कांसेप्ट ऑफ डार्विन मन रहिबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा select the false statement from the following you have to choose which of the statement is false or which of the statement is wrong statement के आराम रे क्वेश्चन टा पढ़ो बिग बैंग थ्योरी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 100% ट्रू बिग बैंग थ्योरी काहा को एक्सप्लेन करथला कि हाउ द यूनिवर्स इज फॉर्मड यूनिवर्स केमिति फॉर्मेशन हेची केमिति होछ यूनिवर्स तो आ विषय रे कहतला बिग बैंग थ्योरी एटा तो ठीक अछि डीजे रितेश एटा ठीक अछि expansion of the universe after the explosion lead to the decrease in temperature universe expanded hela pare temperature decrease is 100% true hydrogen and helium had formed before the explosion nahi kebe bi no before explosion kebe no after explosion gas condense under gravity and form galaxy true अछि big bang theory अनुसार huge explosion hela physical term रे ame jaku भाभी ही पारियानी and after the huge explosion hydrogen and helium gas were released and hydrogen and helium gas under the gravity condensation है कि galaxy formation है and galaxy को नहीं universe तैयार है and our earth is present in which galaxy generally milky way galaxy तो ये थिला इन द बिग बैंग थ्योरी तो यार स्टेटमेंट भीतर हम कोटा इनकरेक्ट ऑप्शन सी विल बी करेक्ट एंड समस्त को आंसर ठीक अछि सी राइट ओके देन जिमा में नेक्स्ट क्वेश्चन को अर्थ वाज फॉर्म डैश बिलियन इयर्स बैक पृथ्वी केते वर्ष पुराना अर्थ वाज फॉर्म dash billion years back 4.5 billion years 5.5 3.5 1.5 कौन हबो संदीप ठीक अछि कृष्णा सुजाता राकेश सोहम yes that is earth is 4.5 billion years ago then who was the scientist who gave chemical evolution theory किए देथिले ऑप्शंस आर डार्विन ऑप्शन 2 एरिस्टोटल ऑप्शन 3 ऑपरिन एंड हाल्डेन ऑप्शन 4 मिलर who was the scientist who gave chemical evolution theory and according to chemical evolution theory life could have originated from non living organic matter like RNA and protein so chemical evolution theory it was given by the scientist Oparin and Halden later stage रे ताको experimental proof करिया पे मिलर experiment करथिले but initially chemical evolution theory पचाला मारिबा होची Oparin and Halden बढ़िया अछि कृष्णा सोहम सरोजिनी ओम प्रकाश बुझेला ओके तो मिलर ताकर जो एक्सपेरिमेंट नैतिले मन रखिबो मिलर कर एक्सपेरिमेंट रे व्हाट आर द अमीनो एसिड्स जनरली रिलीज को टाइप रे अमीनो एसिड रिलीज हेची मिलर कर एक्सपेरिमेंट रे को टाइप रे अमीनो एसिड रिलीज कोन एलानाइन अमीनो एसिड कोन एलानाइन ग्लाइसिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट आउ एस्पारेटिक एसिड एलानाइन ग्लाइसिन आउ एस्पारेटिक एसिड these are the amino acids were released by the experiment which was done by SL Miller clear next question jiba ता पूर्व पिले तमना पय ऑनलाइन रो बेसिकली LTR मेन एग्जाम पय ऑनलाइन रो 9999 प्राइस ऑफलाइन 4999 रहला and this is the official number you can contact and yes also you can fill the Google form which is provided in your description box and आ गोटे एडिशनल नंबर दिया से नंबर कांटेक्ट करके तुम माने जॉइन करि परियो देन मोल्टेन मास ऑन अर्ली अर्थ प्रोड्यूस्ड बा क्वेश्चन पचारची अर्ली अर्थ जेतोले थिला बा से टाइम रे अर्थ रो बेसिकली कोन कंडीशन थिला आ को गैस प्रेजेंट थिला आकु नै कि क्वेश्चन बढ़िया छी संदीप one of a good student of our offline batch and Krishna also our student जति पिला देखुछन आई होप समस्त ही offline student कोन हबो हां हम जानि छे अर्ली एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग थिला ना ऑक्सीडाइजिंग थिला ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थिला कोन गैस थिला मीथेन अमोनिया वाटर वेपर एते टेंपरेचर थिला वाटर वेपर फॉर्म में मिलुथिला आ कार्बन डाइऑक्साइड सो वाटर वेपर methane ammonia carbon dioxide all of these right okay next question को जिबा which part of the solar radiation can break H2O को part रो solar radiation H2O को break करि परियो visible radiation infrared radiation ultraviolet radiation none of these को type रो radiation हमरो break करि परियो H2O
सोहम, केडीएम, संदीप, रुचिस्मिता, स्मृति कौन हम? यस यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Who said that organism develop from pre-existing organism? किए कहिथिले organism develop from pre-existing organism? Aristotle, Alexander Oparin, Thomas Hunt Morgan, Louis Pasteur. किए हबो? Obviously आंसर हो कोन? Louis Pasteur. Louis Pasteur experiment करथिले कोन? Generally he had done a experiment that the name of the experiment was Swan neck experiment. Swan neck experiment. And ये जो experiment रू से देइथिले theory कोन ना theory of biogenesis. Theory of biogenesis. So if the examiner will ask you who was the scientist who gave theory of biogenesis, then answer will be Louis Pasteur. Louis Pasteur कहा को theory को disprove करथिले and generally he disproved Aristotle कर जोटा रहिला हमर कोन spontaneous generation theory. Spontaneous generation theory Aristotle देइथिले कि life could have originated from non living decaying matter. ताकू experimental prove करिया पई Swan neck experiment करथिले हमर मिलर सॉरी पास्चर बट एक्सपेरिमेंट रू से कोन बोले जे भाई ए सब जिंस किछि नो स्पॉन्टेनियसली लाइफ ओरिजिनेट हुएनी नॉन लिविंग डिकाइंग मैटर लाइफ ओरिजिनेट हुएनी सो ताकू डिस्प्रूव करले सेही टाइम पे एंड ऑल टाइम पे पूरा कंप्लीटली डिस्प्रूव कर देले किए ना लुइस पास्चर कर आ सिमिलर टाइप रो एक्सपेरिमेंट लुइस पास्चर बोला बहुत सारा साइंटिस्ट करिसथि टीएच मॉर्गन थॉमस मॉर्गन जो रहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऊपर जनरली से कोन करथले एक्सपेरिमेंट करथले सटन एंड मोवेरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देइथिले बट तापर एक्सपेरिमेंट करथिले टीएच मॉर्गन ठीक अछि यस ओम प्रकाश लुइस पास्चर बढ़िया तापर जुवा नेक्स्ट क्वेश्चन को The idea that life originated from pre-existing life is referred to as abiogenesis, biogenesis, extraterrestrial theory, special creation theory. जो आप कथा कहले कि all the living organisms originates from the pre-existing life बा pre-existing organism एक कथा किए कहिथिले लुइस पास्चर कहिथिले को कथा theory of abiogenesis ना theory of biogenesis सोहम biogenesis ना abiogenesis The idea that life originated from pre-existing life is referred to as biogenesis na abiogenesis. Krishna बढ़िया আছে आंसर biogenesis. Theory of biogenesis. Yes. Theory of biogenesis will be the correct answer. Perfect है Special creation theory अनुसार पृथ्वी केते वर्ष पुराना according to special creation theory पृथ्वी केते वर्ष पुराना special creation theory जोटा ଗୋଟେ conventional religious theory जो थ्योरी बेसिकली बिलीव करथला कि लाइफ ओरिजिनेट हवा पई भगवान दाई बा भगवान तयारी करछंती हिंदू धर्म एंड मुसलमान एंड क्रिश्चियन जो धर्म रो भगवान को बिलीव करती अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी भगवान तयारी करछंती एंड ए थ्योरी कहया कथा इवोल्यूशन बोली किसी जिंस नाही एंड से जनरली भाबुतिले जहां हम आज देखुचे दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच सेमित रूप रे तयारी हिची एंड विल रिमेन इन फ्यूचर सेम टाइप रो रिमेन फ्यूचर रे भी समान टाइप रो रहइबो आज जहां देखा होची फ्यूचर रे समान टाइप रो पास्ट रे भी समान थिला पृथ्वी केते वर्ष पुराना अर्थ इज 4000 4000 वर्ष पुराना ये थ्योरी बिलीव करथला स्पेशल क्रिएशन थ्योरी आ थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस तो तमाने जानिछो अरिस्टोटल पर थ्योरी बा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बोली देखो हम कहि परिया बढ़िया अछि हला ये थ्योरी बिलीव करथला स्पेशल क्रिएशन थ्योरी बिलीव करथला कि पृथ्वी टा होची 4000 वर्ष पुराना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा Life was created by supernatural power. Yes, এই থিওরি ভিতরে আমরা কথা হলে supernatural power life তৈরি করছি বা supernatural power কইলে ভগবান উপরে বা কিছু একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি জিনিস লাইফ को अपेयर करछि बा लाइफ तैयारी करछि बोली किए कहले अबायोजेनेसिस स्पोर थ्योरी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कोन हबो राकेश ओम प्रकाश नताशा स्मृति यस कोन स्पेशल क्रिएशन थ्योरी आ ये तो थ्योरी विषय हम पढिले स्पोर थ्योरी अनुसार कोन व्हाट वाज स्पोर थ्योरी कोन अकॉर्डिंग टू स्पोर थ्योरी लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड एज ए स्पोर कमिंग फ्रॉम अदर प्लैनेट बा अदर कोन से ग्रह रु स्पोर भले आसी कि पृथ्वी रे जनरली स्पोर ता पड़ी छै सेठु लाइफ ओरिजिनेट हिच बोली बिलीव करथला को थ्योरी स्पोर थ्योरी बा अदरवाइज हम ता कहि परिया पांसपर्मिया थ्योरी बाय स्पोर बढ़िया छै जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट द
Right match of endocrine gland and their hormone among the options given below. You have column 1 and column 2, and your duty is you have to join the column 1 with the column 2. And yes, this is a beautiful questions from the endocrine part or the hormones chapter. Pineal gland, as you know that it is called as the biological clock. The pineal gland को हमें यदि कहवा ये की रिलीज करे, pineal gland कौन रिलीज करे? Pineal gland, it will release the hormone melatonin, and melatonin hormone which is responsible for the diurnal rhythm of our body বা sleep wake cycle को regulate करे. Thyroid gland it will release T4 tetraiodothyronine, but এটা হচ্ছে non functional hormone, আর functional form টা হচ্ছে T3. বুঝিলা তো? T4 টা হচ্ছে থাইরক্সিন বলি যাହା କୁହାଯାଏ, but ଇଏ ହଉଛି non functional. থাইরক্সিন डीआयोडिनेज एंजाइम रो प्रेजेंस रे गोटे आयोडीन लॉस करके T3 को कन्वर्सन हुए, और T3 टा होची कोन फंक्शनल. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ओटीटी रे भी क्वेश्चन पचारथिला गुरु, थायरॉक्सिन जो हार्मोन टा रहला बा थायराइड ग्लैंड रो T4 हो T3 हो, T4 टा नॉन फंक्शनल, एटा T3 टा फंक्शनल. एटा गोटे कैटाबोलिक हार्मोन ना एनाबोलिक हार्मोन? इट इज ए कैटाबोलिक हार्मोन, ब्रेक डाउन करियर हेल्प करिवो. कैटाबोलिक हार्मोन माने ये बेसिकली ग्लाइकोजेनोलाइसिस करिवो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करिवो, प्रोटियोलाइसिस करिवो, ब्रेक डाउन करियर हेल्प करिवो कैटाबोलिक हार्मोन. ओवरी विल रिलीज एस्ट्रोजन and adrenal medulla will release epinephrine. Adrenal medulla epinephrine. Then mate ko cortisol, it is released from which gland? Cortisol is released from which gland? Cortisol is released from which gland? Adrenal cortex, adrenal medulla, और को पार्ट रो जनरली हमर cortisol रिलीज हुए. Cortisol it is released from को cortisol कोन हबो? cortisol टा रिलीज हुए हमर कोठी? adrenal cortex. adrenal cortex रो तीनटा लेयर अछि, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फासिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस. आइडिया थिबो ऑब्वियसली निहत रूपे. जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरल कॉर्टिकॉइड बा एडरेनल कॉर्टेक्स रो हार्मोन को हम कॉर्टिकॉइड हार्मोन बोली कहया, जो कॉर्टिकॉइडटा मिनरल बैलेंस करे हेल्प करे. मिनरल कॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन. जोना फासिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, that is example is cortisol. and जोना रेटिकुलरिस रो सेक्स कॉर्टिकॉइड DHEA बा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब रिलीज हो हैला. आ जदि हमें कहबा cortisol टा ये भी जनरली गोटे कैटाबोलिक हार्मोन. cortisol टा होची मॉर्निंग टाइम रे 8 AM रे मोर रिलीज हो, 6 PM रे लेस रिलीज हो. ओके जीवा नेक्स्ट पार्ट को. देन वी कैन से ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम pars distalis, pars intermedia, pars nervosa. ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम तमरो प्रीवियस आरएसटी रो क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन को ग्लैंड रिलीज होली पचारथिला. पिट्यूटरी, पिनियल, पैराथायरॉइड, पैनक्रियास ये वाला ऑप्शन थिला. एंड हमें समझ जानिछे जेहेतु ग्रोथ हार्मोन टा हमर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हुए, बट हमें क्वेश्चन जदि मॉडिफाई करिया पार्स डिस्टालिस ना पार्स इंटरमीडिया ना पार्स नर्वोसा, आंसर हो कोडी पार्स डिस्टालिस. पार्स डिस्टालिस. एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा को हम गोटे ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बोली कहि परियानी. माने जस्ट जदि क्वेश्चन हम पचाला कि among the anterior pituitary and posterior pituitary which is not a true endocrine gland and why? Yes, posterior pituitary, we can say that posterior pituitary is not a true endocrine gland because posterior pituitary is not responsible for the production of any type of hormone. Posterior pituitary, it is the storehouse of oxytocin and vasopressin. It is generally storing the oxytocin and vasopressin and releasing the oxytocin and vasopressin. But oxytocin and vasopressin are synthesized from the hypothalamus. Next question तो पचरा हो, melanocyte stimulating hormone, it is released from pars distalis, pars intermedia, pars nervosa. melanocyte stimulating hormone बढ़िया আছে संदीप, परफेक्ट. KDM रेडी, कृष्णा, सरोजिल परफेक्ट. पचारिबो melanocyte stimulating hormone is released from pars distalis, pars intermedia परफेक्ट. तापर तुम क्वेश्चन पचारिबो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन पई को ग्लैंड बा को हार्मोन हमर मोस्टली रिस्पांसिबल. को ग्लैंड जदी कहया व्हिच ग्लैंड इज रिस्पांसिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट? ऑप्शंस आर पिट्यूटरी, पिनियल,
थाइमस को ग्लैंड टा रेस्पोंसिबल हमर टी लिपोसाइट को मैच्योरेशन करया पे देखो आम समझ जानी बी लिपोसाइट टी लिपोसाइट ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते बा बी लिपोसाइट is generally producing the antibody which is fight against the antigen. B lymphocyte T lymphocyte with B lymphocyte is producing antibody but T lymphocyte is helping the B lymphocyte to produce antibody. B lymphocyte directly antibody production करे T lymphocyte ताको help करे but कथा होची B lymphocyte T lymphocyte जेहेतु WBC रो पार्ट WBC बोन मैरो रो फॉर्मेशन हुए सो बोन मैरो रो B lymphocyte T lymphocyte फॉर्मेशन होती किंतु B lymphocyte बोन मैरो रो फॉर्मेशन है कि बोन मैरो रो मैच्योर हुए टी लिपोसाइट बोन मैरो फॉर्मेशन है कि कोठी थाइमस रे मैच्योरेशन है थाइमस परफेक्ट रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लिस्टेड बिलो आर द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ओरिजिन टिक द रॉन्ग एंट्री एंटीरियर पिट्यूटरी रो सब रिलीज ऑप्शन गुडा अछि ता भीतर तुमको रॉन्ग बाचर अछि टिक द रॉन्ग एंट्री ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीटोसिन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन means you have to find out which hormone is not released from anterior pituitary भाई anterior pituitary रो सब जगह हार्मोन रिलीज हुए ग्रोथ हार्मोन भी हबो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बट ऑक्सीटोसिन टा कोठी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमें ऑलरेडी कहि जे पिट्यूटरी ग्लैंड को जदी हमें हाइपोफाइसिस बोली कहया एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी रो कोन कोन हार्मोन रिलीज हुए पीएमटी फ्लैग PMT flag, prolactin, melanocyte stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, follicular stimulating hormone, luteinizing hormone, adrenocorticotropic hormone, growth hormone. Posterior pituitary just oxytocin and vasopressin को store and release करे. Then तुमको जदि क्वेश्चन पचरा हो follicular stimulating hormone acts on which cell in the testis? Testis रो को cell पर act करे? Option 1 Leydig cell, option B Sertoli cell, option C male germ cell. Follicular stimulating hormone is acting on which cell of the testis? कौन होगा आंसर? Leydig cell ना LH स्टार्ट करे Leydig cell ऊपरे mostly FSH act on the Sertoli cell for the nourishment. Sertoli cell रो काम कोन nourishment provide करियो sperm को तो FSH act on Sertoli cell for the nourishment. LH स्टार्ट करे mostly Leydig cell ऊपर LH act on Leydig cell FSH mostly Sertoli cell act करी nourishment provide करे. Next question जीवा Mary is about to face an interview but during the first 5 minutes before the interview she experiences sweating, increased rate of heartbeat, respiration बढ़िला. So which hormone is responsible for her restlessness? कौन को हार्मोन टा ताको इंटरव्यू पूर्वरु एते नर्वस करउछि? इंसुलिन, ग्लूकागोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन. इजी क्वेश्चन अछि आराम रे करियो. निवेदिता, शुभश्री, रुचिस्मिता, सरोजिनी, केडीएम, कृष्णा, हैप्पी डायरी कौन हम हैप्पी डायरी ऑब्वियसली हमें कौन गया एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन परफेक्ट एंड इफ द एग्जामिनर विल आस्क यू एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन these hormones are released from adrenal cortex or adrenal medulla adrenal cortex release हुए ना adrenal medulla release हुए these hormones are released from adrenal medulla perfect Ankita then among oxytocin and vasopressin which hormone is responsible for the reabsorption of water ପାଇଁ को hormone responsible among oxytocin and vasopressin which hormone is responsible for reabsorption of water obviously answer कौन हबो vasopressin or we can say that antidiuretic hormone insulin and glucagon these two hormones are released from which gland insulin glucagon को gland release हुए pituitary pineal parathyroid pancreas which gland is directly responsible for the synthesis of insulin and glucagon
यस पढ़े आज भासोप्रेसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन कृष्णा co hormone yes co gland pancreas gland perfect pancreas and as you know that pancreas it is a heterocrine gland generally it is responsible for the releasing of hormone as well as enzyme insulin is released from alpha cell or beta cell who can say pancreas ro alpha cell release hoya beta cell as you know that alpha cell will release glucagon and beta cell of pancreas will release insulin. Yes, glucagon it is a hyperglycemic hormone or a hypoglycemic hormone. Glucagon टा blood रे glucose level को बढ़ाए ना कमाए. Obviously answer कौन आसीबो glucagon is a hyperglycemic hormone means it is responsible for increasing blood glucose level. It will increase the blood glucose level. If the glucagon is high, the blood glucose level of patient will get rise. Yes, and insulin is a hypoglycemic hormone. Both insulin and glucagon is a proteinous hormone or a steroidal hormone. Both insulin and glucagon are proteinous hormone or a steroidal hormone. Insulin and glucagon are proteinous hormone. Proteinous hormone. Cortisol, testosterone, estrogen, progesterone. These are the steroidal hormone. Jiba next question को. The steroid responsible for the balance of water and electrolytes. को steroidal hormone आमरो water and electrolyte balance करे help करे. को कौन हबो? संदीप aldosterone perfect. Insulin तो केबे नुह, testosterone तो केबे नुह, melatonin तो नुह. Answer will be aldosterone. Aldosterone it is released from the zona glomerulosa layer of adrenal cortex. Adrenal cortex रो zona glomerulosa layer release हुए कौन aldosterone. Perfect. Next question जिबा. Thymosin is responsible for raising the blood sugar level, increase production of T lymphocyte, raising blood calcium level, decrease in blood RBC. Already हमें कहले increase the production of कौन T lymphocyte. कहीं ना हमें कहले B lymphocyte and T lymphocyte भितरु both production होती कोठु produced from bone marrow. किंतु T lymphocyte mature हुए कोठी थाइमस रे. थाइमस ग्लैंड गोटे हार्मोन रिलीज करे थाइमोसिन. आ थाइमस ग्लैंड टा एट द टाइम ऑफ बर्थ लास्ट थाए आस्ते आस्ते ओल्ड एज आडी गले थाइमस ग्लैंड रो साइज छोटो ही जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन द मेकानिज्म एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर आ भितरु किए साइक्लिक एएमपी, इंसुलिन, गैस्ट्रिक T3. यस परफेक्ट अछि संदीप, अंकिता, नताशा, केडीएम, साइक्लिक एएमपी. Leydig cell produce a group of hormone. Leydig cell को hormone production करे. In case of male, Leydig cell is responsible for production of a group of hormone and called as androgen. Androgenic hormone like testosterone issue. तो cost कौन production करे? Androgen. Ready. Corpus luteum secrete a hormone, progesterone, testosterone, prolactin, aldosterone. Corpus luteum after the rupture of Graafian follicle when the secondary oocyte will ooze out and the ruptured Graafian follicle is called as corpus luteum and the corpus luteum is responsible for the production of hormone progesterone. Answer progesterone. Prolactin is released from which gland? Prolactin hormone it is released from ovary, testis, pituitary, pineal. को gland release हुए? Prolactin. अंकिता prolactin hormone it is released from which gland? को gland रो prolactin नामक hormone release होबो? Prolactin is released from pituitary gland. It is important for milk production or we can say that milk secretion, right? अब aldosterone तो हम जानिला adrenal cortex release हुए, water and electrolyte को balance करे help करे, testosterone तो हम जानिछे, progesterone कथा तो कहले corpus luteum release करे. Next question जिबा. Cortisol is secreted from pancreas, adrenal, thyroid, thymus. Cortisol is released from. एई भलिया क्वेश्चन निहात रूप तमर आसीबो. ऑलरेडी तम माने क्वेश्चन देखिछो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करिथिबो एंड क्वेश्चन रो लेवल जानिथिबो, क्वेश्चन रो पैटर्न जानिथिबो. सो डोंट बी पैनिक, आराम रे क्वेश्चन सॉल्व हो.
कौन हम एड्रेनल परफेक्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल को हार्मोन टा स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करे a hormone responsible for the normal sleep wake cycle which hormone is responsible for maintaining of sleep wake cycle जो टाइम रे सोया से टाइम निद लागिवो उठिबा ए सब के रेगुलेट करिवो अंकिता संघमित्रा कोन हबो आराम रे करिवो मेलाटोनिन रेडी हो एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुलर रिलीज हो इंसुलिन ग्लूकागोन जानि छ गैस्ट्रिन होची कोन गैस्ट्रिन होची जनरली हमर जीआई ट्रैक्ट रिलीज हो आउटर मोस्ट ऑफ द थ्री क्रैनियल मेनिजेस तीनटा क्रैनियल मेनिजेस कौन कौन आउट जो क्रैनियल मेनिजेस रहला तीनटा लेयर कोटा आउटर लेयर डुरामेटर ना आर्कानॉइड ना पियामेटर ना स्क्लेरा कौन बनता सर आउटर कथा पचारची प्रभात यस आंसर कौन डुरामेटर क्रैनियल मेनिजेस डुरामेटर आर्कानॉइड पियामेटर मन रखियो ब्रेनस्टेम इज फाउंड बाय ब्रेनस्टेम कहा को नहीं की थियरी ब्रेनस्टेम इज फाउंड बाय फोरब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन को ब्रेनस्टेम ब्रेनस्टेम कहा को नहीं थियरी मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन बोथ बी एंड सी कौन हो डी बोथ बी एंड सी बट एबे न्यू एनसीईआरटी अनुसार ब्रेनस्टेम होची कहा को नहीं की लिखा है टिके मन रखि थाओ क्वेश्चन अनुसार करिवो मिड ब्रेन जा एनसीईआरटी रे एबे लिखा है मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा हेले तुमको जदी क्वेश्चन पचारिबो गैस्ट्रिक सिक्रेशन सलाइवेशन कफिंग व्हीजिंग स्नीजिंग रेस्पिरेशन कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स ये सब की रेगुलेट करे व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन is playing a vital role for the maintaining of respiration and responsible for gastric secretion salivation coughing wheezing sneezing ये सब कौन मेडुला ऑब्लिंगेटा नॉट अंकिता हाइपोथैलेमस नो मेडुला ऑब्लिंगेटा जदि हम क्वेश्चन पचारिबो व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन is playing a role for hunger area thought center satiety center thermoregulatory center osmoregulatory center को पार्ट ह्यूमन ब्रेन रो जोटी कि सब पार्ट गुडा मिली जिवो हंगर एरिया मिली जिवो थॉट सेंटर मिली जिवो सैटिस्फैक्टरी एरिया मिली जिवो भोक लागिया शोष लागिया रेगुलेट करिवो कि हाइपोथैलेमस क्लियर परफेक्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन की सेरेब्रम तुम क्वेश्चन पचारिबो को पार्ट मेंटेन करे सेक्सुअल बिहेवियर मोटिवेशन इमोशनल रिएक्शन जाई सैड होबा खुशी होबा दुख होबा कि लिम्बिक सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ फोरब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन को ब्रेन रो पार्ट लिम्बिक सिस्टम टा फोरब्रेन रो पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड भाया व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्लेइंग ए मेन पार्ट फॉर द जॉइंट ऑफ राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर विथ लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर किए राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोजम बी कॉर्पस कैलोजम नेक्स्ट forebrain consists of cerebrum thalamus hypothalamus all of these cerebrum consists of कौन all of cerebrum thalamus hypothalamus perfect तुमको जदि क्वेश्चन पचारबो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रेइश लाइक अपीयरेंस और व्हाइट लाइक अपीयरेंस इफ आई विल आस्क यू द ग्रेइश लाइक अपीयरेंस इज पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मेडुला सेरेब्रल कॉर्टेक्स होची ग्रेइश लाइक अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेरेब्रल हेमिस्फीयर cerebrum is made up of how many cerebral hemisphere easy question cerebrum is made up of how many cerebral hemisphere कितना cerebral hemisphere बीटा cerebral hemisphere select the incorrect statement बाचियार अछि तुमको को
Cerebral cortex grayish in appearance, thrown in prominent folds known as sulci and gyri. Concentrated neuron cell body gives the grayish like appearance. कौन हम ना fiber of the tract covered with the myelin sheath constitutes the inner part of the cerebral hemisphere. Cerebrum is wrapped in called as medulla. कोटा पचारची भूल देखो cerebral cortex टा होची grayish like appearance 100% true. prominent folds गुडाक cerebral cortex रे जो fold गुडा अछि gyri and sulci, gyri sulci ठीक अछि. concentrated neuron cell body gives the grayish color ठीक अछि. जो cell body टा होची grayish like appearance दोछि cerebral cortex को true. Fibers of the tract covered with the myelin sheath constitute the inner part of the cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere inner part टा myelin sheath ठीक अछि. Cerebrum is wrapped around a structure called as thalamus. Wraps around a structure called as thalamus. Option D. OJEE exam रे first year रो important chapter. OJEE exam रो first year important chapter से human physiology रहिबो, plant physiology रहिबो, हैला. आ OJEE रे reduce syllabus भी तमा आसी पारे. Digestion जो कटि छी सेटा आसी पारे हैला. चैप्टर नेक्स्ट. Cerebral cortex contain sensor area, motor area, neither motor area nor sensor area, association area ना all. हमें समझ जानी चाहिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स रे सेंसर एरिया अछि, मोटर एरिया अछि, नाइदर सेंसर एरिया नॉर मोटर एरिया अछि बा एसोसिएशन एरिया अछि. ताले कोन हबो ऑल ऑफ दिस हबो. परफेक्ट ऑल ऑफ दिस. रेडी जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. द एसोसिएशन एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पांसिबल फॉर जो एसोसिएशन एरिया रहिला सेरेब्रल कॉर्टेक्स रो तो आमे जोटा कहले कि नाइदर मोटर एरिया नॉर सेंसर एरिया एसोसिएशन एरिया तीनटा एरिया सेंसर एरिया अछि, मोटर एरिया अछि, एसोसिएशन एरिया अछि. तो एसोसिएशन एरिया रो काम कोन फंक्शन कोन रिस्पांसिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन कम्युनिकेशन मेमोरी ऑल ऑफ दिस परफेक्ट. तापरे द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. The major coordinating center for sensory and motor signaling is thalamus, hypothalamus, medulla, pons. Major coordinating center for sensory and motor signal. कौन हो? निवेदिता, संदीप, सरोजिनी, प्रभात. बफर होन तो मानकु ठीक ठाक चलची वीडियो. आई होप बफर हो नथिबो. आंसर थैलामस. बफर होन तो संदीप, संगमित्रा, अंकिता, माइंड मैप मास्टर, शुभश्री तमन क्लियर अछि तो बफर होन तो ठीक अछि परफेक्ट. तुम क्वेश्चन पचारिबो रेस्पिरेशन को किए रेगुलेट करे. मेडुला ऑब्लिंगेटा, pons, cerebellum, hypothalamus. Which part of the human brain is generally controlling the respiration or respiratory rhythm center? Respiratory rhythm center is located in the medulla oblongata, and the function of a respiratory rhythm center medulla oblongata काम respiration को regulate करिवो. How? Because in medulla oblongata there is a center called as a respiratory rhythm center, and respiratory rhythm center which is continuously firing the signal to the external intercostal muscle and to the diaphragm muscle to get contract. lungs को contract करिया पई respiratory rhythm center continuously signal दउथाय कहा को external intercostal muscle को and diaphragm को. And there is another center is the pons area which is called as pneumotaxic center जे कि respiratory rhythm center को stop रो signal दे मिनटी को 12 रो 16 थरो. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. Hypothalamus contain the brain center which controls. Means the examiner is asking about hypothalamus or what are the functions of hypothalamus. And yes, I think already we have discussed this question in previous question, so this is the easiest question. Body temperature, urge of drinking, urge of eating, भोक लागिबा, शोष लागिबा, body temperature regulate करिबा, these are the functions of hypothalamus. So the correct answer will be all of these. Which of the following is true about hypothalamus? Hypothalamus को नेकी कोटा true. Which of the following is true about hypothalamus? कौन हबो? शुभंकर, संघमित्रा, निवेदिता,
situated in the base of thalamus, contains neurosecretory cells, it contains the center of thermoregulation, all of these. What will be the correct answer here? Yes, all of these. Limbic system consists of, बढ़िया क्वेश्चन ये सब पढ़िया क्वेश्चन गुड़ाक पूरा सिलेक्टिव क्वेश्चन गुड़ाक तुमको या लेवल रो या ठाରୁ तुमको लो लेवल रो बरम क्वेश्चन आसीबो आ ठाରୁ टॉप लेवल रो क्वेश्चन आसीबोनी पानिक हवार किछि असुविधा नहीं सॉल्व करो आराम से max to max time you have to give your chapter chemistry. Sarojini, Ankita, Sandeep, Natasha, ready. कौन हबो? Limbic system, it is a part of forebrain and limbic system कहाँ कहाँ नहीं तियारी? Inner part of cerebral hemisphere. Inner part of cerebral hemisphere plus amygdala plus hippocampus आकु मिसिकी लिम्बिक सिस्टम रो लिम्बिक सिस्टम आ लिम्बिक सिस्टम रो काम कोन सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करिवो सेक्सुअल डिजायर मोटिवेशन इमोशनल रिएक्शन लाइक सैड हैप्पी इशू. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. The part of the brain located between the thalamus and hypothalamus of forebrain and pons is known as. The part of the brain located between the thalamus, hypothalamus of forebrain and pons is known as. कौन हबो? Part of the brain located between thalamus and hypothalamus कौन हबो? Sarojini, C. Hind brain, mid brain, all of these. Subhagar, mid brain. Then दरकार नहीं एटा आई रो क्वेश्चन पळे आसी तमरो एटा the nerve centers which control the body temperature and the urge of eating are contained in. एवडा क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन कोन हबो? हाइपोथैलेमस हबो बॉडी टेम्परेचर एडा सब कंट्रोल करे हाइपोथैलेमस हो. Yes, the purplish red pigment rhodopsin containing the raw types of photoreceptor cell normal कथा human derivative vitamin A. टिके क्वेश्चन पचासी बस. When the neuron is in resting stage आकु नेकी तमा अरेस्ट रे क्वेश्चन आसी छि प्रीवियस ईयर तेणु कर एवडा क्वेश्चन ओटा ऐड करा छि. When a neuron is in resting stage प्रीवियस ईयर आसी छि not conducting any impulse जेतबेले कोनोसी impulse conduction करेनी ताले को स्टेटमेंट करेक्ट हबो आकु नै क्वेश्चन आसी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन को नेगिरी कृष्णा कार क्वेश्चन ए केते नंबर क्वेश्चन सी कंपेयरली मोर परमिट टू के प्लस आयंस नियर इंपोर्टेंट टू सोडियम आयन जेतबेले गोटे न्यूरॉन टा रेस्टिंग स्टेज रे थिबो सपोज ये रहला हमर एक्सॉन रहला भीतर रहला एक्सोप्लाज्म रेस्टिंग बेले भीतर मोर नेगेटिव चार्ज as compared to positive charge बाहर है पॉजिटिव चार्ज टिक अधिका थिबो एंड देयर इज ए पंप सोडियम पोटेशियम पंप जे कि कोन करथिबो 3Na+ आउटसाइड 2K+ इनसाइड एतिक डाटा तो एटलीस्ट मन रखा दरकार है. रेस्टिंग स्टेज को पोलराइज स्टेट बोली कहा जाए 3Na+ आउटसाइड 2K+ इनसाइड तो कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू K+ परमेबल टू K+ माने परमिट करथबो K+ को भितर को आसिया पई एंड नियरली इम्परमेबल टू Na+. सी विल बी करेक्ट आंसर. बट प्रीवियस रे तम क्वेश्चन आस्तिला पोलराइजेशन पर डीपोलराइजेशन जेतले एक्शन पोटेंशियल जनरेट हबो रेस्टिंग बेले तो ये कंडीशन रहइबो एक्सोप्लाज्म रे मोर नेगेटिव चार्ज लेस पॉजिटिव चार्ज एंड आउटसाइड ऑफ द एक्सन मोर पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज ए सोडियम पोटेशियम पंप व्हिच इज कंटीन्यूअसली फायर ऑफ द 3Na+ टू द आउटसाइड एंड कंटीन्यूअसली गिविंग 2K+ टू इनसाइड. बट डीपोलराइजेशन रे तले एक्शन पोटेंशियल जनरेट हबो कोन हबो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन और रीपोलराइजेशन रे आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन एति मन रखिता एटलीस्ट डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन डीपोलराइजेशन outflux of potassium ion repolarization. Clear? Then come to the nuclear envelope is a derivative of smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, microtubule, membrane of a Golgi complex. Nuclear envelope is a derivative of nuclear envelope is a derivative of
आराम से आंसर दियो डेरिवेटिव ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंसर जार डी मारचो ट्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will be the correct answer here. Then come to the second question, and these questions are from the chapter cell. The structure that are formed by the stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast. बढ़िया अच्छी संदीप. The flat membranous sac in the chloroplast, crista is stroma lamella, grana stroma, grana. Hello? Flat coin-like structure is called as thylakoid, and the bunch of thylakoid is called as granum. More than one granum is called as grana. ये गोटे granum, तो plural form था grana. And each granum are connected together by stroma lamella. So if I will ask you stroma lamella रे को पट्ट सिस्टम प्रेजेंट था, पट्ट सिस्टम 1 ना पट्ट सिस्टम 2, आंसर will be पट्ट सिस्टम 1 प्रेजेंट था. थाइलाकोइड रो मेम्ब्रेन रे बोथ पट्ट सिस्टम 1 पट्ट सिस्टम 2 मिलिबो. पट्ट सिस्टम 1 केते नैनोमीटर लाइट के ऑब्जर्व करियो 700 नैनोमीटर, पट्ट सिस्टम 2 केते नैनोमीटर लाइट ऑब्जर्व करियो 680 नैनोमीटर. बट स्ट्रोमा lamella रे को पट्ट सिस्टम एब्सेंट, पट्ट सिस्टम 2 इज एब्सेंट. In stroma lamella you will see only and only photosystem 1, and which is responsible for the absorbing 700 nanometer light. Select the correct matching. Smooth endoplasmic reticulum, oxidation of phospholipid. Rough, correct matching dela. Rough endoplasmic synthesis of glycogen, synthesis of glycogen. Rough endoplasmic oxidation of fatty acid, synthesis of lipid. Smooth endoplasmic reticulum, synthesis of lipid. Next, true nucleus is absent in. True nucleus is absent in. कोउथरे true nucleus absent. True nucleus is absent in. कौन हबो? Yes, true nucleus is absent in, and you have to find out which of the following option is a prokaryotic cells. Prokaryotic cell जे थिबो से ही तार true nucleus absent थिबो. तो हमकु खोजिवार अछि true कहा की होची prokaryotic cell. As you know that mucor, volvox, vaucheria, anavena. So the correct answer will be mucor. True nucleus mucor, mucor, rhizopus albugo. These are the example of a fungus. The answer will be anavena, nostoc anavena. These are the examples of bacteria. So correct answer will be A. Bas. Correct answer will be A. बढ़िया अछि संगमित्रा सरोजनी. Next question. Which of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? कोउटा गोटे inclusion body नुह जोटा found in prokaryotes. Phosphate granule, glycogen granule, cyanophycin granule, polysome. Which of the following is not a inclusion body found in the prokaryotic cells? Prokaryotic cells रे मिलुथिबा कोउटा गोटे inclusion body नुह. कौन आंसर? Yes, phosphate granule, glycogen granule, cyanophycin granule, polysome is the incorrect. And what is polysome? You have to remember, when several ribosome attached to a single mRNA is called as polysome or a polyribosome. This is the most important question. Polysome or polyribosome means several ribosome attached to a single mRNA is called as polysome or polyribosome. Then come to the next question. DNA is present in. DNA कोठी देखा जाए. DNA is present in mitochondria, ribosome, chloroplast, nucleus. Sorry, DNA is not present in. Question is about DNA is not present in. कोठी DNA देखा जाए नहीं. Ribosome, mitochondria, chloroplast, nucleus. कौन हबो? DNA is not present in chloroplast, nucleus, ribosome, mitochondria. Obviously कौन हबो? Ribosome. As you know that DNA is found in nucleus, mitochondria, chloroplast, NMC. You have to remember this trick. NMC एमाने सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, and DNA न्यूक्लियस रे मिलिबो, माइटोकॉन्ड्रिया मिलिबो, क्लोरोप्लास्ट मिलिबो, बट राइबोसोम रे मिलिबोनी. राइबोसोम डिस्कवर करथिले जॉर्ज पालेडे. प्रोकैरियोटिक 70s, यूकैरियोटिक 80s. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम 70s, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम 70s, यूकैरियोटिक रोचे 80s.
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड को माने होचंदी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नुह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड Which of the following option is not membrane bound? Answer non membrane bound organelle सब किए किए endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, vacuole. These are the non membrane bound organelle. ठीक अछि completely भूल एमान सब single membrane bound organelle. Nucleus, mitochondria, chloroplast double membrane bound organelle. NRI कोटा nucleolus, ribosome, inclusion body ये सब non membrane bound. तल कौन हो ribosome non membrane bound. मेजोजोम तो रहिला बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन लाइसोजोम तो सिंगल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक सिंगल मेम्ब्रेन ताले आंसर कोन हबो राइबोजोम विल बी द करेक्ट आंसर ए ठीक अछि फाल्गुनी सरोजिनी परफेक्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल रे को स्ट्रक्चर टा मिले नाही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल रे कोटा मिले नहीं राइबोसोम मेसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोटिक सेल रे कोटा मिलेनी राइबोसोम भाई मिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिले मेसोसोम मिले न्यूक्लियर एनवेलप मिलिबोनी ताले आंसर कोन हो स्वाति परफेक्ट आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर न्यूक्लियर एनवेलप मिलिबोनी द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच इन द रॉक एंड होस्ट टिश्यू व्हिच सरफेस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया इज इंपोर्टेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ होस्ट टिश्यू बैक्टीरिया को होस्ट टिश्यू माने केस रे को सरफेस स्ट्रक्चर टा अटैचमेंट रे हेल्प करे कोन हबो फिम्ब्रियाई विल बी द करेक्ट आंसर ये संदीप पढे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा कलम को तुमको जोड़ियार अछि आंसर समस्त दियो इजी क्वेश्चन अछि कौन हम क्रिस्टाई होची इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टर्नी होची डी शेप लाइक गोल्गी apparatus कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होची कौन क्रोमोसोम होची एटा क्रोमाटिन आ थाइलाकोइड होची फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन द स्ट्रोमा सो आसीबो तो ओके सो एटा हिला जे तमरो सेशन जो थरे कि हमें 46 क्वेश्चन डिस्कशन कले एंड आई होप निहात रे सब पिला को किछि ना किछि फ्रूटफुल हेइतिबो किछि ना किछि भल लागितिबो सो आई होप एइटा हम एंड करिया समस्त भल से पढ़ा पढ़ी करो प्रिपरेशन करो भगवान को दया समस्त भल रे रुआ खुशी रे रुओ तो आई थिंक किछि तो किछि हेल्प हेइतिबो क्वेश्चन प्रैक्टिस हेइतिबो तो मोस्टली हमर जो ऑफलाइन पिला थिले ऑनलाइन पिला थिबे तांको भी क्वेश्चन टिके प्रैक्टिस हेइ सारतिबो सो एइटा हम लाइव को एंड करिया नेक्स्ट लाइव रे हमें होल्ड फास्ट होबनी मोस्टली बैक्टीरिया पे हमको टर्म यूज करिया पड़े फिम्ब्रियाई होल्ड फास्ट फ्रंट एगुडा सब हमें यूज करि पारे आल्गी हेरिका केस पई मोड हमको फिम्ब्रियाईटा यूज करेटा होची मोस्ट एप्रोप्रिएट हबो बैक्टीरिया को अटैचमेंट रे बैक्टीरिया को मूवमेंट रे होची फ्लैजेला अटैचमेंट रे होची फिम्ब्रियाईटा होची मोस्ट एप्रोप्रिएट हबो ठीक अछि सो एटा हम एंड करिया गुड नाइट ऑल ऑफ यू थैंक यू धन्यवाद गुड नाइट कृष्णा